Hi guys, welcome to my channel. So today we will discuss the rate of a reaction and the differential rate of equation and how to calculate the units of a different order of a reaction. So firstly we will discuss the rate of a reaction. Basically, what is the rate of reaction? Rate of a reaction means speed, velocity, as we have discussed in my previous video. So how we can write the differential equation for the different type of order of reaction? So simply, what is rate of reaction? Rate of reaction is basically depends upon the concentration of a reactant. ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਆਫ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਰੇਟ ਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰੇਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਰਾਈਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਦੈਟ ਰੇਟ ਇਜ਼ ਬੇਸਿਕਲੀ ਡਿਪੈਂਡਸ ਅਪੋਨ ਦਾ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਰਿਐਕਟੈਂਟ. ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਦ simple equation, general equation for a chemical reaction. This is the general chemical reaction. So in the left hand side these are the reactant and in the right hand side these are the products. So the rate of reaction is depend upon the concentration of the reactant. So the mathematical expression is basically the mathematical expression for the rate law equation is basically depends upon the, basically we can say it describe the variation of reactant with respect to the time. Means concentration of the reactant with respect to the time is basically known as the rate law of a reaction. So the rate of the above reaction can be written as minus the rate of change of concentration of A with respect to time, and also the second reactant, which is the B, the rate of decrease of concentration of reactant B with respect to time T. So it means in terms of order we can write this equation. It is the rate constant concentration of A raised to power exponent, the concentration in concentration into, it is not minus, here I am representing the power concentration of A, and B concentration small b. So this is the simple differential rate equation for a chemical reaction. So here we have the different type of rate equation for the reaction of different orders, like we have discussed first order, second order and the third order reactions. So here we will discuss how to calculate the unit of a different order of reaction in the next video. So here is how we can write the rate equation for different type of order of reaction. So firstly we will write the rate equation for the zero order reaction. So zero order reaction means zero order da matlab हैगा कि the rate of reaction is not depend upon the concentration of the reactant. ਜਿਹੜਾ rate ga for the zero order reaction, it is independent of the rate concentration. So simply we consider this is the zero order reaction, a reactant converted into the product. So the differential rate equation for the zero order reaction can be written as the rate of change of concentration of A with respect to time dt, and that will be equal to K concentration of A raised to power 0, means the exponent power concentration is equal to 0 because it doesn't depend upon the concentration of A. Basically it is written as the rate of change of concentration with respect to time is directly proportional to the concentration of the reactant. When we open this proportionality sign, then that proportionality sign will be equal to K, and K is equal to the rate constant. ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ constant ਜਿਹੜਾ K ਗਾ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ rate constant ਬੋਲਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ. So this will be equal to, as we know that it is the concentration of A will be equal to 0, means it is independent of the concentration of the reactant. So this A raised to power naught will be equal to K, and so this is the differential rate equation for the zero order reaction. And how we can calculate the unit? We will calculate the unit in the same manner
ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨਿਟਸ ਹੈਗੇ ਸੇਮ ਮੈਨਰਸ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਰਾਈਟ ਡਾਊਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਈਜ਼ੀਲੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੌਨਸਟੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਰੇਟ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਮੀਨਸ ਆਪਾਂ ਨੇ ਯੂਨਿਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਫॉर द ਜ਼ੀਰੋ ਆਰਡਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੇ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੇ ਰੇਟ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸੇਮ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਵੇਰੀਏਬਲ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਇਸ ਸਾਈਡ, ਕੇ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਮਾਈਨਸ DA/dt। ਜਿਹੜੀ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੋਲ ਪਰ ਲੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੋਲ ਪਰ ਲੀਟਰ, ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨਿਟਸ ਗਏ ਮੋਲ ਪਰ ਲੀਟਰ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਆ ਗਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈਕਿੰਡ। ਸੋ ਦ ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਆ ਗਏ, ਮੋਲ ਪਰ ਲੀਟਰ ਪਰ second. So this is the unit for the zero order reaction. Next is the first order reaction. First order reaction means the rate of reaction is depend upon the concentration of the single reactant. सिर्फ एक single reactant उत्ते depend करेगा। And same we will consider the equation कि A converted into the product and the rate equation is rate of change of concentration with respect to time is depends upon the concentration of the reactant A. ਇਹਦੀ ਪਾਵਰ ਐਕਸਪੋਨੈਂਟ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, 1 ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਸਿੰਪਲ ਰੇਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਫॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन and how we can calculate the units. So take k in this side, वेरिएबल्स ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸੇਮ वेरिएबल ਸੈਪਰੇਟ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆਪਾਂ ਨੇ, that is equal to k is equal to minus d concentration A dt and concentration A. ਸੋ ਇਹਦੇ ਯੂਨਿਟਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਮੋਲ ਪਰ ਲੀਟਰ, टाइम के यूनिट्स हो जाएंगे सेकेंड एंड सेम कंसनट्रेशन यूनिट होंगे मॉल पर लीटर। मॉल पर लीटर बोथ विल बी कैंसल आउट एंड वी हैव लेफ्ट ओनली सेकेंड इनवर्स मीन्स द यूनिट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज सेकेंड इनवर्स। सो द नैक्सट वन इज द सैकेंड ऑर्डर रिएक्शन। सैकेंड ऑर्डर रिएक्शन के आप दो टाइप के यूनिट्स जोड़े है कैलकुलेट कर सकते हैं, वैदर बोथ द रिएक्टेंट आर सेम एंड द रिएक्टेंट आर डिफरेंट। वैन बोथ द रिएक्टेंट आर सेम मीन्स टू मॉलिक्यूल ऑफ reactant A means दो reactant participate कर रहे हैं and they converted into the product. So the rate equation is depend upon the concentration of reactant. So this is equal to दो reactant है, power exponent is equal to 2. So calculate the units means K will be this side and this is minus DA/dt divided by A square इस साइड आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू A square। ये कंसनट्रेशन के यूनिट हो जाएंगे मॉल पर लीटर, टाइम दे हो जाएंगे मॉल पर लीटर एंड टाइम दे हो जाएंगे सेकेंड और कंसनट्रेशन स्क्वेयर दे हो जाएंगे मॉल पर लीटर द स्क्वेयर। मॉल पर लीटर हो गया इन्हों ओपन कर लेंगे मीनस मोल द स्क्वेयर लीटर द -2 सेकेंड। इन्हों आप सेम जोड़े है उन्होंने डिनोमीनेटर में असी न्यूमीनेटर के लै जाते हैं। सो ये आ जाएगा मोल पर लीटर एज इट इज़ मोल -2 लीटर +2 सेकेंड इनवर्स। सो जिन्हों दी बेस सेम्स ने पावर ऐड हो जाएगियाँ, 1 की पावर यदि -2 है तो 1 -2, लीटर की -1 हैगी, लीटर की +2 है, सो इस -1 +2, सो दिस इज सेकेंड इनवर्स। एक ही आ जाएगा 1 - 2 मीन्स -1, दिस इज लीटर, -1 +2 की हो जाएगा 1 के बराबर सेकेंड इनवर्स। इट मीन्स मोल इनवर्स लीटर पर सेकेंड इज द यूनिट्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। सेम वी विल कैलकुलेट द यूनिट फॉर द थर्ड ऑर्डर रिएक्शन and that is कि जो reactants गए 3 reactant will participate in the reaction, same 3 reactants converted into product and the rate lies rate of change of concentration of A with respect to time. It depends upon the concentration of the reactants. Sorry, here it is equal to 3 reactants ने पावर कंसनट्रेशन 3 के बराबर आएगी। यूनिट्स कैलकुलेट करने हैं, K will in this side and AQ will in this side in denominator and इधे यूनिट्स हो गए मॉल पर लीटर सेकेंड एंड मोल पर लीटर द क्यूब। इन्हों आप ओपन अप कर लेंगे हैं, दिस इज इक्वल टू मोल पर लीटर एज इट इज़ आ जाएगा, सेकेंड एज इट इज़ आ जाएगा, ये हो जाएगा मोल दी रेज़ टू पावर 3 लीटर दी रेज़ टू -3। सो आप इन ऊपर वाली साइड लै जाते हैं, मोल ये 1 ने, ठीक है, ये 3 है, इट मीनस 1 - 3, लीटर का -1 है तो इतने +3 हो जाएगा, -1 +3 सेकेंड इनवर्स। ये आ जाएगा मोल रेज़ टू पर -2, ये -1 +3 हो जाएगा 2 के बराबर, दिस इज सेकेंड इनवर्स। सो like this we can calculate the unit of the different order of reaction and also how we can write the rate equation for different order of the reaction.